हेलो, नमस्ते। हमारे 20वें वार्षिक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यहाँ देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। Today is a day of great honor and privilege as we have the distinguished presence of our esteemed chief guest, Mr. Suhas Ahuja. We welcome all our parents, chief guests for the program. Mr. Suhas Ahuja, members of the management of Shri Hirji Bhojal and Sons, CVO Jain Chhatralaya. Our principal, Ms. Prachi Randive, head of department, Shri Sunil Damewal, other invited guests, teachers and staff present in the audience. We are delighted to witness your presence and the anticipation on your faces. It is evident that you are excited for the upcoming show of Std VIII Production House. We assure you that the performances will captivate your hearts and leave you with a profound sense of joy, humor, and inspiration. In today's digital age, where we have access to various entertainment platforms such as OTT and television. एक सेकेंड, आज कुछ अलग करते हैं। Oh yes, it is indeed a special experience to witness a live performance. We believe that the magic of theatre and live performances brings a unique charm and connects us on a deeper level. अपने ब्रह्मांडवाणी को विश्राम पर रखते हुए नाटक का आनंद करते हैं। अब हर अच्छे कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं, तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हम उमंग से विनती करते हैं कि वो मान्यवरों को दीप प्रज्वलन के लिए रंगमंच पर ले आए। We now invite the singers to commence the program with a soulful rendition of prayers, seeking the blessings of the divine. कोई भी कार्यक्रम भगवान के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं हो सकता, इसलिए हम हमारे गायकों को प्रार्थना के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं।
we express our heartfelt gratitude for the soulful prayer. The annual day holds immense significance for every student at Shishwan. This event highlights our school motto, every child counts. It provides a platform for our students to develop their skills and personality. They gain proficiency in expressing emotion, showcasing talents, improving communication skills, fostering teamwork, and much more. This occasion allows us to explore various aspects, recognizing our individual strengths and talents. It is a fantastic journey of learning that goes beyond the confines of a typical classroom or lecture. The literature novel is comprehended with a clarity and a deep understanding of the book. What a delightful way to learn. We are confident that you will equally enjoy the performances presented by us just as much as we have cherished the entire creative process. With the experiences and learnings we acquire in our school, we believe that we can achieve great success, name, and fame. The values instilled in us today will shape us into capable, productive, and trustworthy citizens of our beloved nation. The bright faces we witness today, showcasing their talents, are destined to grow into responsible individuals. Let's see our journey. आइए हमारे वार्षिक उत्सव के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों ने प्रोडक्शन टीम की मदद की और वार्षिक उत्सव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन नाटकों को जीवंत बना दिया है। इसकी शुरुआत सर्कल टाइम से हुई जब हम पहली बार निर्देशक से मिले, उनके साथ नाटक का वाचन किया। फिर हम क्या करना चाहते थे वह निर्देशक को बताया और उन्होंने अभिनय, निर्देशन, संगीत, नृत्य, रोशनी, ध्वनि, रंगमंचन की सामग्री और वेशभूषा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को तय करने की मदद की करने के लिए हमारा ऑडिशन लिया। इस तैयारी के बाद आखिरकार बहुत अभ्यास के से यह नाटक प्रस्तुति के लिए तैयार हुआ है। After the script reading with the directors choose the assistant directors from within the students themselves. Students in the costume department designed the costumes and had a meeting with parents. The assistant directors helped in blocking the scene and characterization. The props team designed and prepared the props and took the responsibility to handle the backstage. We explored all the departments of a theatrical performance based on our interest. And with this, Standard 8 Production House presents यो 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 ये कहानी है सबको सुनानी है बकरी और मॉकिंगबर्ड की कहानी जो दिखानी है यो यो यही ये कहानी है जो सबको सुनानी है बकरी और मॉकिंगबर्ड की कहानी जो दिखानी है यो यो। अब आइए शिक्षकों, निर्देशकों और छात्रों द्वारा किए गए प्रयासों पर एक नजर डालते हैं। To Kill a Mockingbird is an emotionally moving book penned by Harper Lee. It is a remarkable piece of literature that stays true to reality and tells a captivating tale of discrimination. The character of Atticus Finch, the father of Scout, draws inspiration from Lee's own father, a progressive lawyer and statesman from Alabama who courageously fought for the rights of African Americans. Now, let's embark on a journey to Macomb County. But first, let's get a look of behind the scenes.
black and white. A girl is having a rape night. Shoot all the blues you want. If you can hit them all. Shoot all the blues you want. If you can hit them all. But remember, it's a sin to kill a mockingbird. But remember, it's a sin to kill a mockingbird. For they do nothing but sing their hearts out for us. For they do nothing but sing their hearts out for us. Sound the mockingbird, and he sounds the song of hope. Hope that everything will be clear, yet no matter past out of the wings. Shoot all the blue jays you want, if you can hit them all. Shoot all the blue jays you want, if you can hit them all. But remember, it's a sin to kill a mockingbird. Shoot all the blue jays you want, if you can hit them all. Shoot all the blue jays you want, if you can hit them all. If you can hit them all. If you can hit them all. Hello and welcome to this little slice of heaven, Makeup County, Alabama, the home to Jem, Scout, and Atticus Finch. Our county is a serene one, but lately there have been some strange incidents that have disturbed its peace. This is the story of one such incident. A black man has been accused of raping a white woman, and the entire county is gossiping about it. Anyway, let us introduce you to the town and its good folks first. Come along.
Apparently, she's from outside of Alabama. The new teacher? Really? I'm so glad my Trudy isn't in standard 1. Shh! Here she is with Miss Maudie. Oh, hello, Miss Maudie. Who's this you're with? Yes, do introduce us. It's so fresh to see a new face in Mekong. This is Miss Callerite, the new Standard 1 teacher. But I'm sure you must have heard about her arrival. Hello everyone, lovely to meet you all. The pleasure is ours. The new teacher, hey, there's no point in bothering yourself with those kids. Take my advice and leave while you still can. Don't you mind her now, she's just old and bitter. I'm not too old to give you a piece of my mind. I'm sure I've got plenty of your mind, Miss DeBose. Oh, come, Miss Caroline. We'll show you around Mekong. Thank you. Have you tried the new walnut cake from the Mekong bakery? This is the best gift we've had yet from Atticus. Sure is. Jem, look. Stocks plummet. Cotton crops fail. Farmers in turmoil. Oh Jesus! Man from Mekong to join Alabama's cricket team. Black man accused of raping a white woman. Oh my God! Miss Maudie's cake recipe stolen. Yes! Hey, you! Leave my salon! Get lost, you snobs! Okay, fine. You're so embarrassing, Dad. Shut up! Get away from me. I need some money for the kids' food, Dad. There ain't any. What did you do then? I don't care. Bring me my bottle of whiskey. No. Bring it to me now. Hey, it's time to move on. I owe them some money. Quick. It's a hard day of work. You're right, man. Oh, look, we have to do more work. Ah, yes. Sir, will you be here for dinner? No, I'm afraid not. Judge Taylor wants to see me about a case, so I'm not sure what time I'll be finished either. Atticus, I shot more tin cans than Jem today. Shh. Scout, you know I let you win. I don't hear about what you're doing with those obscene weapons. Not me. Oh, Atticus, but we can't shoot anything that moves yet. Good. I hope it stays that way. But if not, just remember, you can shoot all the blue jays you want, if you can hit them. But remember, it's a sin to kill a mockingbird. Yes, sir. Listen, I've got some work I need to complete, so come and say goodbye. And you'll mind Kyle when I'm gone. How come we can't shoot mockingbirds, Cal? Well, why would you want to? Mockingbirds don't do one thing, but make music for us. They don't eat up people's garden, nor do they nest in our houses. They don't do one thing, but sing out of their heart for all of us to enjoy. That's why it's a sin to kill a mockingbird. Now, you stay in range of my calling. Dinner won't take too long. Give it to me, Jem.
Hey yourself. I'm Charles Baker Harris. I can read. So what? How old are you? Going on 7. No wonder then. Scout here can read and she ain't even started school yet. Just thought. You like to know? You want to play with us? Charles Baker Harris. Lord, what a name. It's not any funnier than yours. Aunt Rachel tells me you're called Jeremy Atticus Finch. My name is wrong, but you can call me Dill. Where do you come from? Meridian. I'm staying with Aunt Rachel for the summer holidays. Come on now, let's go play. Poor Mrs. Dewber's. Her flowers were everywhere, all over the garden, once Jem had finished with them. Come on now. Atticus got Jem to read her for an hour every day. She does say some awful things that the children just haven't learned how to respond to. He's learning his lesson. I don't understand where they get these wild ideas from. And what's his name, the other one they're playing with? Oh, that one's just here for holidays. He's staying at Rachel's all summer. His name is Dill. Don't his parents care for him? I mean, who just leaves their child at someone else's place? I don't know. And Scout, that Scout needs to learn how to behave. She never wears pretty things. Always in her overalls playing like a boy. I know. I do find Atticus as a bad father. My daughter bakes cakes, but you are a great mother. Oh, thank you, Stephanie. Come on now. It's not Atticus's fault. They don't have a mother. But can Atticus really expect a Negro woman Calpurnia to raise Scout into a lady? I don't understand why he doesn't send her to us. I'm sure I know exactly why he doesn't send her to you. Now what does she mean by this? I don't know. Are you ladies now? Yes. Jen, I'm sick of this game. Haven't you got another one? Well, back in my home, my dad and I used to play this game about a giant monster with big yellow eyes. Where is your dad? I haven't got one. Is he dead? No. Scout! What? How can he say he hasn't got one if he's not dead? Don't listen to it. Let me tell you about Macomb County's really on monster. And it's really real. You won't scare me. I wrestled an alligator for my 6th birthday. You couldn't wrestle Buradley. He lives there, by that tree. And with the tracks he leaves, I reckon he must be about 6.5 feet tall. He has big yellow rotten teeth with stains of red where animals have been eaten. Mostly like cats or squirrels. Boom! That wasn't scary. I wonder what he looks like. Let's make him come out next summer. Bye. Come on, Scout. We have school to go to. Miss Caroline. I'm new to Macomb County, so can everyone repeat my name? Miss Caroline? Miss Caroline. Now, before we begin with our lesson, I want everyone to put their lunch boxes in front of you. Everyone, put your lunch boxes in front of you. I said, put your lunch boxes in front of you. What is your name? His name is Walter, miss. He hasn't got any lunch. Well, there's no need to embarrass Walter. Did you forget it this morning?
Here, I'll lend you a quarter so you can go and buy your lunch. And your mom can pay me back tomorrow. No, ma'am, thank you. It's okay, Walter. Take it. No, ma'am. Miss, he can't take it. He's a cunning miss. Of course he can. You're Walter. No, miss, you don't understand. Excuse me? You're shaming him. He's too poor to pay you back, so he won't take it. Atticus did some legal work for Mr. Cunningham one time, and they paid us with hickory nuts and bags of wood. That's enough, young lady. Atticus says they're good folk. They just don't have any money. I said enough. It's not your fault you don't know all the folk here yet, miss. You just don't know. What is your name? I'm John Louis Finch. But you can call me Scout. Come here, young lady. Miss? Give me your hand. Now, we're going to be learning our alphabet over the next few weeks and... What? It's alive! What's the matter, ma'am? You see a mouse? Don't need to worry, Miss Caroline. We will catch him. Where did he go? Not a mouse. You mean him, miss? Yes, he's alive. Did he scare you? I just saw it crawl out of his hair and it's alive. You mean a cootie? Why there's no need to fear a cootie, ma'am? Haven't you ever seen one? Now just go back to your desk and teach us that fine alphabet you spoke of. What is your name, son? Barasibel. Yes, I have an email here, but no first name. Boris, I think we better excuse you for the rest of the afternoon. I want you to go home and wash your hair. You ain't sending me home, missus. I was on the verge of leaving. Anyways, I'm done my time for this year. What do you mean by that? He's one of the evils, ma'am. The whole school is full of them. They come on the first day of every year and then they leave. You're supposed to mark them absent for the rest of the year. But what about the parents? Well, they ain't got no mother and they're parasite contentious. Coming to the first day of first grade for 3 years. Reckon if I'm smart this year, they will promote me to the second. Sit down, please, Boris. You try and make me missus. He's likely to try and start something. He's a real mean one. It's just you gone home now, buddies. Yes, Boris, go home. If you don't, I'll call the principal. Ain't a snot-nosed school teacher ever born can make me do nothing. You ain't making me do nothing, missus. You ain't making me go nowhere. Just remember that. You ain't making me go nowhere. It's okay, missus. He's a real mean one. You just get on and teach us that alphabet, miss. He won't be back. No, he sure won't, miss. We are better off without him. Yes, thank you, children. I'll just go speak with the principal and I'll be right back. Gee, what a first day. I think I like school. Scout, you got beats on the first day. Walter! Scout, get off him. What do you think you're doing? He made me start off on the wrong foot. I got beaten because I explained he had no lunch and he just stood there. It's okay, Walter. Your dad knows Atticus. You can come home for dinner with us. Jem! Have you seen this? Atticus Finch has been assigned to defend that Negro by Tom Robinson. He's a respectable man, Atticus. But he should think of his family. All I know is there were some hard times coming. My wife already can't stop complaining about how he lets his children run wild. I saw that nigger when he got arrested, crying like a baby, pleading he was innocent. I had to man to take him off. The sheriff, there and then, finish him off with my gun. Be easier and quicker for all of us that way. One less nigger to worry about. But Atticus aims to defend him. That's what I can't believe. Nigger lover. God, save Atticus. Jem, look. There's something new in the tree. Look. It's gone. Scout, don't eat that.
who's putting these things inside for us, but it sure is nice. Perhaps I should write a letter to whoever it is. Yes, I'll tell Jem that we should write a letter to whoever's putting these gifts inside your knothole. I've got to go to school now, though. Scout, you were talking to that tree, right? No, it's none of your business anyway. You were. Scout Finch talks to trees. Just shut your face or you'll be for it. Scout talks to trees. And her daddy. Her daddy's a nigger lover. I don't know what that means, but you can just take it back, Cecil. I won't. Scout talks to trees. Look, Miss Maudie's coming. Atticus ain't any nigger lover. Scout, don't you ever let me hear you say that again. What on earth do you think you were doing? Miss Maudie, Cecil Jacobs. I said don't say those horrible words again. You're Louis Finch? But it's what they all said. Do you know what that means, Scout? No. Well, just go home and ask your father. There may be more and worse than that to come over to the following month, Scout. And your father will want you to keep your head, don't you think? Yes. I'm sorry, Miss Maudie. Now, you just come over to my house after school. I'm just about to put a cake in the oven and I'll need eating. Atticus Finch, what are you doing here? He's a nigger lover, that's what. Yeah, nigga, all right. Just let us in, Atticus, and you won't get hurt. I'm afraid I can't do that. Hector will be around us somewhere, so you better be off. Now we sent him and his men off on a false call. They won't be back for hours. So let us deal with him, Atticus. You don't want no trouble. So get out of our way, old man. Atticus? Go home, Jem, and take Scout with you. Jem, I'm telling you, go home. I'll make him listen to you. Don't you touch him! How dare you! And don't you push people, Scout. Ain't anyone going to push Jem around like that? Jem, I'm asking you, son, go home. Get them out of here, Atticus. Hey, Mr. Cunningham. Mr. Cunningham, don't you recognize me? I go to school with Walter. He's your son, ain't he? He's a lovely boy, your son is. And he does really well at school. Atticus, I was just telling Mr. Cunningham how nice a boy Walter is. What's the matter? I'll tell Walter you said hey, little lady. Come on, boys, it's time to go. But we ain't finished yet. That's right. Ain't letting no nigger lover have his way. I said let's go. They gone, sir? Yes. Get some sleep now, Tom. They won't be bothering you anymore. We can go home now, Jem. Oh God, Arthur is never going to stop putting gifts for the kids in this tree. Being his brother, I'll have to take matters in my own hands. Cal, why'd you put my posh skirt out? Well, if you're coming to the church while your father's away, you better be dressed to impress my friends. We're coming with you? You think I'm going to let you alone on a Sunday morning? Yes! Jen, we're going to Cal's church. You ready, mister? Mister? I reckon he's just about a Mr. Scout. Yes, you all been growing mighty quick. Jem, the tree's gone. I was going to send a letter. Seems a bit strange to me, Scout. Think someone found out we are getting gifts from them and didn't want us to get any more. Why would they do that? Cal, do you know what happened to the tree? I think Mr. Nathan Radley chopped it down this morning. Come along.
Everybody, please settle down. My name is Reverend Siles, and I want to welcome you in the name of Jesus, even if you are a stranger. We are so blessed to have all of you here with us today. Please stand up for the hymn. That's it for today, folks. We'll meet you next Sunday. We were mighty glad that you were here. Pass our wishes to your father, Miss Finch and Mr. Finch. Of course, 7 sides, sir. Until next time, children. Now off you go. Atticus, we went to church with Cal today. Very good. I hope you behaved. It was so much more fun than our church. Atticus, I found a visitor under the bed. Alexandra was under the bed. Aunt Alexandra. Is she come to stay, Atticus? Well, I'm sure she was sitting under the bed. No, it's not Alexandra. Dale, what in the Sam Hill are you doing here? I thought you weren't coming this year. I wasn't. Why are you all dirty? I had to run away. My new parents kept me in chains in the basement. I nearly starved because they forgot to feed me. But there was a farmer who kept me alive the past few weeks because he sneaked me green beans through the window. How was there a window in the basement? But then I escaped and found a small circus. They hired me to wash the camel. How do you wash a camel? Dale. Atticus, can Dale stay with us? He's been locked up washing camels. What really happened, Dale? Just got left alone a bit. Felt lonely. So I took a train with my pocket money. Please don't make me go, Mr. Finch. Cal set up a spare bed in Jem's room. Yes, sir. You can come with us to Cal's church next week. Can't he, Cal? You'll be doing nothing of the sort, John Louis. Hello, Aunt. Put my case in the spare room, Cal. Yes, ma'am. Hello, brother. Welcome, Alexandra. Jem, Bill, Scout, and Alexandra will be staying with us over the next week as I'm going to be very busy. Atticus, why can't we go to church with Cal? Cal says it's fine. You'll mind your auntie while she's your Scout, and that's the end of it. The Negroes' church is no place for a member of the Finch family to be, John Louis. But we went there too. Auntie doesn't need to know we went to the scout. She'll only get upset. Come on, Dil, I'll show you your bed. Atticus, is it because everyone keeps calling you a nigger lover that Aunt Alexandra doesn't like Cal's church? Something like that, Scout.
You know Aunt Alexandra's prouder family name? Yes. Well, this case I'm taking on, it's quite unusual. The people are shocked I'm defending Tom Robinson. Because he's a Negro? Don't use that word, Scout. It's degrading. But yes, Tom is a black man. What's a nigger lover? So you heard people call me that. I'm sorry after you heard these things, Scout. But people of this town don't think I should do much about defending Tom Robinson. So you may even hear worse over the coming weeks. But Scout, I want you to promise me one thing. No matter what gets said, don't lose your head over it. No fighting. Can you do that for me? Yes, Atticus. It's full. Well, we sit, Jem. You sure Atticus won't mind if he sees us here? He won't need to see us. Besides, he will be concentrating too much to take even notice of us. There's Reverend Sykes from Cal's church. He's waving to us. Come on, let's go sit up there. There's Atticus. Quick. But you said he wouldn't mind. This court is now in session. Mr. Gilmer? I would like to call the sheriff, Mr. Hectate. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Could you recite for me in your own words what happened in the evening of November 21st, Mr. Tate? Alright. Bob Evil, right at my house, early that evening. Very excited he was. He said he had to get to his house quick. Some Negro had attacked his girl. And what did you see when you arrived there? Found her lying on the floor, all beat up, the furniture all thrown around the place. I asked her who hurt her. Go on. She said Tom Robinson. I asked her if he beat her. She said yes. I asked her if he took advantage of her. She said yes. So I went down to his place and took him in. Thank you, Mr. Tate. Any question, Atticus? Yes. Sheriff, did you or anyone call a doctor to attend to Miss Mayala? No. Did you not think it necessary to gain medical evidence of what had happened? Well, she was mighty beat up. It didn't need no doctor to see that. She even had a black eye started. Which eye? Let's see. The left side of her face. Her left facing you? No, that would make it my right. I don't know, she was all banged up on the right side of her face. Please repeat what you just said. She was all banged up on the right side of her face. Thank you, Mr. Tate. Bob Evil. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Are you the father of Mayala Evil? Well, if I ain't, I can't do anything about it now. Mama's dead. Are you the father of Mayala Evil? Yes, sir. Answer the question, and there will be no unnecessarily obscene language or suggestion within this courtroom. Do you understand? Tell us what you saw on the evening of November 21st, Mr. Evil. Well, I was coming in from the woods and I heard Myla screaming like a stuck pig inside the house. So I dropped my load and I ran to the window. And I see that black nigger attacking my Myla. Mr. Evan, I have warned you once. You will keep your language within the confines of Christian English usage. Proceed, Mr. Gilmer. Did you see the defendant attacking your daughter? Yes, I did. What did you do? I dumped my load and I ran across the house to get him. But by the time I was there, he'd escaped. Just left Myla there screaming. Then what happened? Then I ran to fetch Hector, who I knew was alright. We walked past the house every day, lived in that nigger nest down that place. I knew they were dangerous, nasty folks to live around. Thank you, Mr. Evil. Just a minute, sir. May I also ask you a few questions? Sure, go ahead. Folks were doing a lot of running this evening, November 21st. You ran to the house, to the window, inside, and then to Mr. Tate. Did you at any point run for a doctor? Didn't need to. Would have cost me $5 anyhow. Wasn't gonna waste that. Very well. Now, Mr. Evil, you heard Mr. Tate's testimony. Yes, I did. You agree with his descriptions of Mayala's injuries, that her right eye was blackened and that she was beat up on the right side of her face? Yes, I agree with all that. Mr. Evil, can you read and write? Objection. Judge, I can't see what a witness's literacy has to do with the case. Irrelevant and immaterial. Judge, if you'll allow this question another one, you'll see. All right. Objection overruled. Can you read and write? What is so interesting? He's left-handed.
Thank you, Mr. Evil. Was my being left-handed having anything to do with it? Or trying to trick me? Atticus Finch tricking me as like you want That's enough, Mr. Evil. Miela Evil. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes. Please tell the jury what happened on November the 21st. What were you doing that evening? I was on the porch. And what happened? Well, was on the porch and he came. And you see, there was this old cupboard in the yard. Papa had told me to chop it. But I wasn't feeling that strong. And then he walked by. I said, "Come here, boy, and bust this cupboard for me." So he came in the yard and I went in the house to get him a nickel. And before I knew it, he got me down the neck and hit me again and again. Goon. And he took advantage of me. That'll be all. Atticus. Miss Miela, how old are you? 19. How many brothers and sisters do you have? 7. How long did you go to school for? 2 or 3 years. Don't remember. A 19-year-old girl must have friends. Who are your friends, Miss Miela? Friends, you making fun of me, Mr. Finch? Do you love your father? Love him? What do you mean? Does he treat you well? He is tolerable Except when what? When he's drinking? When he's drunk, has he ever beaten you? Answer the question. No, he's never beat me. Now we best get to the case. You say you asked Tom Robinson to chop up a cupboard. Was Tom Robinson well known to you? He passed by every day. Was this the first time you asked him to come inside and help you? Yes. You never asked him to do any odd jobs for you before? I might have. But you just said he hasn't come inside the fence before. Miss Miela, do you ever remember asking Tom Robinson to do any odd jobs for you before? No, I can't. Stand up, Tom. Take a good look at him. Did you ever invite this man onto your land before? I told you, no! And you're sure that this is the man, as you say, attacked you and took advantage of you? Yes, I'm sure. Catch this, Tom. Now, hold it with your left hand. I can't, sir. Why not? My left hand don't work, sir. I got it trapped in a cotton mill when I was a boy. Thank you, Tom. You say he choked you and hit you above the face. Yes. He hit you again and again whilst he had hold of your neck. Yes. No. I don't remember. It all happened so quickly. It's an easy question. You remember that he choked you, but do you remember him hitting you again and again? I've told you again and again, haven't I? I just want to make sure. This is the man who took advantage of you. Yes. How? What do you mean, how? Objection. He's browbeating the witness. He's doing nothing of that sort. Sit down, Mr. Gilmore. Miss Miela, you have testified that Tom Robinson sneaked up behind you, choked you and beat you. He hit you? Yes. Why are you asking me over and over again? He blacked your right eye with his right hand. Miss Miela, was it Tom Robinson who beat you up or was it your father? Why won't you tell us the truth, child? Did Bob Evil beat you up? I got something to say. You want to tell us what really happened? I got something to say and then I ain't gonna say nothing more. That black man took advantage of me. And if you find fancy gentlemen don't want to do anything about it, then you're all just a bunch of yellow stinking cowards! She's lying! Order! That is all. The state rests. Shall we try to wind up this afternoon? I think we can. How many witnesses you got? 1. Call him up. Tom Robinson. Sorry, sir. That's all right, Tom. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Tom, were you acquainted with Miela Evil? Yes, sir. Had to pass by her place every day, going to and from the field to work. Did she ever speak to you? Yes, sir. Why? Yes, sir.
I tipped my hat at when I'd go by, and one day she asked me to come in and bust up an old cupboard. When was that? Must have been way over a year ago. When I finished, she said, "Well, I guess I'll have to give you a nickel." But I said, "No ma'am, there ain't no charge." Did she ever ask you to come inside and help again? Yes sir. It seemed like she'd have some or the other thing for me to do when I'd go by. Were you ever paid for your services? No sir, I was glad to do it. Mr. Evil didn't seem to help her, neither did any of the children. Tom, what happened to you on the night of November 21st? I was going by the Evils as usual when Mayala was on the porch and the house was real quiet. Mayala asked me to come in and do some work, do some job. So I went inside and that's when I realized why the house was so quiet. Go on, Tom. There were no children. So I asked her, where are the children? She says, they in town getting ice cream. Took me a slap here to save 7 nickels, but I done it. What did you say to that? I said that it was mighty glad of her to treat the children like that and that I may best be going if there was nothing that I could do. But she said there was to bring the box down inside the house. So I went inside and then she grabbed me and Tom, you have sworn to tell the whole truth. She grabbed me and she hugged me. She said that she's never held a grown man before. But she said hug me back. So, but I tried to push her and run, but she'd got her back to the door. That's when I see Mr. Evil hollering through the window. Go on, Tom, what did he say? He said, "You're a damn slut, I'll kill ya." I ran so fast, Mr. Finch, I don't know what happened. Tom, did you harm Mayala Evil in any way on the evening of November 21st? No, sir. Why did you run? I was scared. Why? Mr. Finch, if he was black like me, you'd be scared too. I want to tell you one thing. That boy worked for me 8 years and I ain't had a speck of trouble out of him. Order! He ain't done anything That's wrong. enough. He's innocent. If you want to say anything, you can say under oath and at the proper time. Disregard that remark. You're pretty good at busting up a cupboard with one hand, aren't you? Yes, sir. Strong enough to choke the breath out of a woman. I never... But you're strong enough. I reckon so. Tell me more. Why do you run away? I was scared. Scared of having to face up what you've just done? No, scared of having to face up to what I didn't do. You being caught like I'm in now. You being impudent to me, boy. I didn't go to be. That'll be all. Shall we try to wind up? Mr. Gilmer, do you want to say anything more? I have nothing further to add. Let the evidence speak for itself. There is a man here guilty of rape. He cannot be trusted and needs to pay for his crime. Atticus, do you want to say anything more? People of the jury, this case is not a difficult one. It is as simple as black and white. The state has not produced one iota of evidence that the crime Tom Robinson was charged with ever took place. It relies instead on the testimony of 2 witnesses. Witnesses whose testimonies have been called into serious question. I have nothing but pity in my heart for the chief witness. But my pity does not extend to her putting a man's life at stake. And that's what she's done. Done it in an effort to get rid of her guilt. I say guilt because guilt is what motivated her. She committed no crime, but she broke a rigid code of our society. What did she do? She tempted a Negro. She did something that in our society is unspeakable. She's white and she tempted a Negro. No code mattered to her until she broke it, but it came crashing down on her afterwards when her father found out what happened. And what did he do? There is evidence to support that Mayala Evil was beaten by someone who led exclusively with his left hand. We all saw Bob Evil write with his left hand. And Tom Robinson sits here before you, taking the oath with the only good hand he possesses. His right. You're tricking! Lying! Shut your mouth! Atticus, please continue. You know the truth. And may I remind you that we're in a courthouse. The one institution in the country where all men are created equal, whether they be black or white. The court's integrity to this equality relies on its jury. The jury is only as sound as the people who make it up. I have faith that you can bring this man to justice. In the name of God
Do your duty. In the name of God, believe him. People of the jury, have you reached the verdict? Yes, sir. We find the defendant guilty as charged. That's not fair. He's innocent. Hand behind your back, Tom Robinson. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark, then something came creeping. It told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains of valley low, give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh, everything you want to go, that'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. How could they do this, Atticus? I don't know, son. It ain't right. They knew he was innocent. Everyone did. The people of Mecomgond are stuck in a wage jam. They've done it before, they did it tonight, and they'll do it again. And when they do, it seems that only children weep. Gracious me, look at all these gifts. It's from the people of a community, Kyle. They appreciate what your father did, Jem. It didn't do no good in the end. Oh yes, it did, mister. How so? Tom is still locked up, ain't he? The jury didn't care about nothing about the truth. Do you want to know something, young man? Now, I wasn't there, but I've been told that the jury was on for 5 hours. Cases like this would normally get over in 5 minutes. But there was someone on the jury who was holding out for Tom's innocence. Who? One of those Cunninghams. What? The Cunninghams. But Kyle, the Cunninghams tried to kill Tom at that night in the jail. Well, since that night, he just must have had a little something on his hand. Or his mind changed. That wasn't quite enough. He got persuaded, and the verdict came as guilty. It's a glimpse of hope, young Mr. Finch. It's a glimpse of hope. Come now.
Yeah, fine. Move that thing. You have done a splendid job, Gertrude. Why, thank you, Alexandra. Your help has been so valuable. Now let the party begin. Hey, Atticus. Scout is Cal. I think she's helping Mrs. Merriweather. What's the matter, Atticus? Atticus? There's been some terrible news. Jem, please fetch California. Yes, sir. Sir, Atticus, how nice to see you. What do you think of the color scheme this year? It's grand, I'm sure. Gertrude, I need to take California with me. Atticus, what's happened? Tom Robinson is dead. What? But how? They say they shot him. They say he made a run for it, so they shot him to stop him. But didn't they give him any warning before shooting him? Heck, Tate said he had 17 bullet holes in his body. But that just ain't fair, Atticus. No, son. California, I need to help me tell Helen, Tom's wife. Yes, sir. Excuse me, Atticus. But if the fancy dress competition is going to run smoothly, I do need California. Gertrude, anything you needed California for, I'm sure I'm just as capable of doing. Brother, I'm beginning to understand you a little more each day. Thank you, sister. Atticus, I'm coming with you. Okay. Scout, will you stay with me? Yes, Auntie. We'll do Cal's job, Atticus. And now, for your entertainment, we have the fancy dress competition and judge the best dressed foods from around the world. First, we have the Indian idli. Hello, I am Italy and everybody likes to eat me with chutney. Next, we have the Italian gelato. Slurpa, slurpa. Ambita il gelato. Up next, we have the Mexican taco. Taco. Where is taco? Scout. Scout. I'm a taco, and everyone likes to eat me. How could they do this to Tom? It's just not fair. They knew the truth. Why would they do that? It's not right. Why Scout, would they do be that? quiet on it, please. Why? It's not fair. I heard something. It was just my costume. I heard it again. How could they do that, Jam? Don't do that, Scout. I don't know how to do it. I heard something, I'm sure. It's probably just Cecil Jacobs trying to scare us. Cecil Jacobs is a big fat idli. Come on, Scout. Work faster, Scout. I'm going as fast as I can. Bloody Atticus children. Let me go. Let me go.
Jem? Jem! Scout! Atticus, what happened to Jem? Is he dead? No, just a broken arm. Come in, we're in here. Someone after my kid's head. Yes. Scout, what happened? It's kind of like this. Me and Jem, we were walking, and Jem kept hearing these noises. All of a sudden, someone tried to grab me and Jem. I was knocked to the floor. Jem, he must have gotten up and pulled them off me. When I opened my eyes, I could see this man carrying Jem home. But I thought it was Jem who saved me. Who was it, Scout? It was him in the corner. Hey, boo. Scout, this is Mr. Arthur Riley. I believe you already knows him. Now let's leave Jem in peace. Head, can I speak to you outside for a minute? Sure, Atticus. Come on, sir. You don't know the house so well. I'll show you there. You want to say bye to Jem first? He's asleep, so you can pet him if you like. Couldn't if he was awake, though. Wouldn't let you. Well, heck, I guess the thing to do is, good lord, you'll have to come before the court. What will Mr. Finch? Of course, it was clear-cut self-defense. Mr. Finch, do you think Jem killed Bob Evil? Your old scout said he got up and yanked him off her. Mr. Finch, hold on. Jem never stabbed anyone. That's mighty kind of you, head, but I won't have my son growing up with a cover shame about his name. We'll see what he can remember tomorrow. Mr. Finch, Jem's arm was broken. He couldn't have killed anybody. It's really going to head, but I won't have this hushed up. It's not how I raise my children. Hush up what? Jem didn't do it. Then who did? Come on, boo, sir. The porch is this way. Listen to me, Mr. Finch. Bob Evil fell on his knife. Heck, I won't have my children hear me say something different to what they know to be true. Mr. Finch, you've been through a strain tonight that no father should ever have to go through. But you're being mighty slow right now. Just think about it. Then who did? Mr. Finch, I already told you, Bob Evil fell on his knife. I may not be much, but I'm the sheriff of Macomb County. I'm going on 43 years, and I know everything that's happened in this town since before I was born. There's a black boy dead for no reason, and now the white man that's responsible for it is also dead. Let the dead bury the dead this time. Arthur? Know what would happen if the truth be told? All the ladies in Macomb, including my wife, would go to his house, bake him cakes, and call him a hero. I'm not going to take that great and that shy man and drag him into the spotlight. To me, that's a sin. I already told you, Mr. Finch, I may not be much, but I'm the sheriff of Macomb County. And Bob Evil fell on his knife. Good night, Mr. Finch. Scout, Mr. Evil fell on his knife. Do you understand? Yes, sir, I understand. Mr. Tate was right. What do you mean? Well, it would sort of be like shooting a mockingbird, wouldn't it? Yes, it would, honey. It would. Arthur, thank you for my children.
लवकरात लवकर. Hello. Yeah. To Kill a Mockingbird is truly one of the most beautiful books of all time, and we hope that this play helped breathe new life into it. Everyone on this play has worked so hard and put their blood, sweat, and tears into making it amazing in all aspects, whether it be acting, directing, singing, dancing, or even just the sets and the props. I would now like to call Sid to introduce the Hindi play. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक कालातीत राजनीतिक व्यंग्य है. यह 3 दुर्द बदमाशों की कहानी है जो अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहते हैं. यह नाटक व्यंग्य के रूप में एक सामाजिक कालातीत प्रस्तुति है जो गांधी के दर्शन के मुखौटे के लिए है. आज़ादी के बाद की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लालच से भरा हुआ है ये तमाशा. आइए देखते हैं ये तमाशा. सदा भवनी दयने समुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश. 5 देव सह 5 दल लगी ठोकी रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश. अरे नटराजा, कहाँ जा रहे हो? वापस तो आओ, सुनो तो सही. ऐसा नाटक तो हमसे कराया है क्या जिसमें आती गई तो नजर ही नहीं. रूप के सूप में बात तुड़ जाए, सत्य क्या इसकी खबर ही नहीं. सत्य क्या है? सत्य नहीं जानती? तब तो हे संकट पूछू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू या उनका मुंह नोचू. हे संकट पूछू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू. हे संकट मोचू.
वैसे ही नाटक खेलना इतना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे गाने गाकर तुम हमारी मन से छुट्टी ही कराओगे। नहीं भवानी, ये तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। आम आदमी को मारो गोली। जरा यहाँ के दर्शकों पे भी तो ध्यान दो। सभी बड़े शहर के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखे होंगे। कुछ घटी हुई चीज पेश करनी चाहिए। घटी हुई चीज? समझा नहीं। मतलब कहीं खरी सही। हाँ, यही मतलब है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, कलात्मक सुरुचि संपन्न। कलात्मक मतलब डब्बे में डब्बा? हाँ, डब्बे में डब्बा। अरे ओ मंजू जी, इधर आओ, जरा ताल दे दो। 1 2 3 4। डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चींटी या मेरे अब्बा। अरे चुप करो, उसने कहा आपने शुरू भी कर दिया। जाओ यहाँ से। यह कोई मजाक नहीं चल रहा है। भला सच्ची बात भी कौन करता है? और जरा जबान संभाल कर, मुफ्त होके नहीं, गवारों की तरह। फिर हम गवारों के बीच जाते गवाई गांव में। मुझसे नहीं होगा नाटक। क्यों शाम चौपट कर रहे हो? इतने भले मान लोग आए, कुछ तो ख्याल दो। मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे डर लगने लगा है। किससे? तुम्हारे दर्शकों से और तुमसे। मुझसे और दर्शकों से? हाँ, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। झूठ, मैं तो केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक पेश करना चाहते हैं। बहुत कविता रचते थे ना, मंच पे आओ। यानी नाटक का जो सजा सजाया था चला आ रहा है, उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। हाँ, सभी बड़े नाटककार भी यही करते हैं। ठीक है, पर मुझसे नहीं होगा। न सही, कुछ तो होगा। माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कुछ ठीक नहीं। अब आप सब आ ही गए हो तो नाटक भी देख के जाएंगे। हमने सोचा था हम कवि है तो नाटक भी लिख ही लेंगे। क्या समझान मुझान चल रहा है? कुछ नहीं, तुम शुरू करो, उन्हें मजा आ रहा है। तुम इतनी मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा? ऐसे बनता है वापस, तुम्हें क्या पता, तुम शुरू तो करो। ठीक है, तो एक मशक ला दो। मशक? हाँ, मशक मतलब मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। हाँ, समझ गई। अरे ओ बेस्टी। हाँ, क्या हुआ? अरे अपना वो गाना शुरू कर दो। कौन सा? वही बकरी वाला। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भर के लोगा वह कुछ न कहेगी, जा जा के सी जाएगी, हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। अरे ओ बेस्टी, इधर आओ, पानी पिलाओ। मैं चल भाग यहाँ से। अरे रुक, अच्छा बताओ किसकी खाल है? ये। हाँ, ये बकरी की। ए रुक, इधर आओ, बैठ इधर। ये बकरी की खाल है। ये बकरी की खाल है? हाँ, बकरी की खाल है। मिल गई? हाँ, मुझे भी मिल गई। क्या तुझे मिल गई? मुझे भी मिल गई। क्या मिल गया ठाकुर? ऐसे भी क्या मिल गया भाई, अम्मी जाने। क्या हूर की परी मिल गई? नहीं। बड़ा माल हाथ लग गया? नहीं। तो क्या राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गए? नहीं। मैं समझ गया, सोने चांदी की खान मिल गई। नहीं। सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। मिल गई। ताज्जुब है, लगता है कोई नया डाका डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दीवान जी? अब हम डाकू नहीं, शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी? हाय, अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? वही जो हमारा होगा। यानी मजे, बहुत मजे, खूब मजे। मजे? हाँ, मजे। साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ना समझने की बात है ना समझाने की। बकरी की मिमियाने की आवाज सुनो, उसके जादू को पहचानो, सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो,
जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। अब पैसे मत रूठो दीवान जी। मैं समझ गया, अब आप हमें अपना नहीं मानते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दीवान जी? आप पहले भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तो साफ साफ बताओ क्या मिल गया है? बता दे। बता दो। सच बता दे। बता दे। दीवान जी अपने ही आदमी है। तो सुनो दीवान जी। बोलो। एक बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। नायाब तरकीब। तरकीब? अरे उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट ही भला था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। हम माला माल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारे पर चलेगी, हम माला माल होंगे। तो बताओ तरकीब। पहले एक बकरी ले आओ। बकरी? हाँ हाँ बकरी, पर जो भी, जहाँ भी, जैसे भी। ओए चल, एक बकरी लेके आते हैं। अरे गांव में बकरी कहाँ मिलेगी? अरे तू चल तो सही। अरे ओ बेस्टी, इधर आ, गाना सुना हमें। कौन सा? अरे वही बकरी वाला। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आग रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। लो लेकर आए तुम्हारी बकरी। शाबाश, ये हुई ना बात। अब बताओ ये क्या है? बकरी। किसकी बकरी? गांव के हरिजन की। नहीं, बिल्कुल गलत। तो फिर? यह गांधी जी की बकरी है। ये गांधी जी की बकरी है। हाँ हाँ, महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है? ये तो दूध देती है। नहीं, यह कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा देती है। अच्छा बताओ ये क्या खाती है? ये घास खाती है, घास। नहीं, यह बुद्धि, बहादुरी और विवेक खाती है। यह महात्मा गांधी की बकरी है। दीवान जी ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिली है। लोग इसके दर्शन करने आए, पर खाली हाथ नहीं, साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। पर लोग मानेंगे कैसे? हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा बतौदी में गंगा। यूँ समझिए दीवान जी कि इस बकरी कीमा 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 गांधी जी के पास थी। मैं समझ गया, अगर कुत्तों का खानदान हो सकता है तो फिर बकरियों का क्यों नहीं? ये उनकी समझदारी की बात। दीवान जी हमें गांधी जी की बकरी मिली है, हम इसकी प्रतिष्ठा करेंगे। सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। तो प्रभु जी दान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली चाहे हो मुंबई, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दीवान जी अब हम चलते हैं। इस बकरी के आसपास किसी को फटकने मत देना। अगर कोई पूछे तो बोलना ये गांधी जी की बकरी है, इसके पास हर सवाल का जवाब है। पर जो खाली हाथ है वह वापस जाए। अरे तेरा डंडा वाला गाना गा तो। झंडा, अरे झंडा नहीं डंडा, चल। झंडा ऊंचा रहे हमारे सबसे। गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, तेरा दिमाग फिर गया है। तू इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है। दफा हो जाए यहाँ से। पर हुजूर हमारे घर पर रही है, हम खिलाया पिलाया है। क्या खिलाया इसको? आज पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी, फल। पर हुजूर जानती है यह कितने की बकरी है? हाँ हुजूर, जमींदार साहब 20 रुपए देते हैं। हमने नहीं दिया, हमने बच्चे को बहुत प्यारी लगी। 20 रुपए? यहाँ 55 करोड़ की बकरी है। यहाँ से नेता आ रहे हैं। मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता। अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा। ABCDEFGH go अंगा। दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए,
हे त्राता सुखदाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बकरी देवी की जय, बकरी देवी की जय, बकरी देवी की जय। ए औरत, बोलती कहानी बोल, बकरी देवी की। बोलती कहानी बोल, बकरी देवी की जय। भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिली है। कुछ लेना कुछ खोने के समान होता है। अब जिन्हें खोने के लिए तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि आप कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने सिर्फ दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया और सब कुछ आप देने को तैयार भी है, पर आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए हैं। जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, मगर जब सवाल ही मर चुका हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बह सकता है जिसकी आत्मा में जान हो, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे श्वास लाश में घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसे श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। बकरी देवी की जय। ये बकरी सबकी है, इसीलिए ये किसी की नहीं है। इससे निर्मलता का मतलब खुद के प्रति प्रेम है। आप जितना देंगे उतना ही आपको देंगे। और ऐसी दुनिया में लोगों की कमी नहीं जो कहेंगे कि ये बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। जो इतिहास को झुठलाता है वो समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये युग झूठे दावों का नहीं। अधिकारी के दावा करने से पहले हमें देखना होगा कि उसकी कर्तव्य की बुनियाद क्या है। पर हुजूर, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बना ले, हमें अपनी बकरी चाहिए। ए औरत, तू कौन है? हम आपकी प्रजा है सरकार। प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। नहीं हुजूर। सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखाओ। औरत, कबीर दास कह गए हैं, ईजा गंदा में के ही समझाओ। बोल, तूने इससे क्या सीखा? हम अनपढ़ गरीब है हुजूर, हम क्या सीखे? तो इस बकरी ने तुझे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख, अपने पैरों पर भी खड़ा होना सीख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना तो अपने हाथ से कमा सके, कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर। बोल, त्याग कर। नहीं हुजूर। फिर यह बकरी तेरी कैसे हुई? जब इसने तुझे कुछ कहा ही नहीं, फिर ये तेरी कैसे हुई? हुजूर, हम जानते हैं कब खाती है कभी सोती है, हम रात दिन साथ रहे हैं। इसलिए कह रही है ये बकरी तेरी है। पेट से तो कुछ पहचान आई नहीं, फिर ये तेरी कैसे हुई? जा, निकल जा यहाँ से। गांधी जी को बकरी को पालने का तो कोई हक नहीं है। भले तेरा रही, बढ़िया तेरी ना कभी हो सकी ना होगी। पर हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हुजूर, ये बकरी हमारी है, हम लेके रहेंगे। औरत, होश में बात कर। हम होश में बोल रहे हैं कि ये बकरी हमारी है, हमें दे दी जाए। तू भाग जा यहाँ से, यह बकरी इनकी है। नहीं हुजूर, हम गरीब का सहारा मत छीनो। गरीबी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि गरीबी केवल मन की होती है, विचारों की होती है, दृष्टि की होती है? पता है, गांधी जी केवल 6 पैसों में गुजारा करते थे। अगर नहीं जानती तो ये आजाद देश में आने का तो कोई हक नहीं है। हम देश में रहित हुजूर, हम तो गांव में रहित। लेकिन यह बकरी सारे देश की है। हाँ हुजूर, पर हमारे गांव में बड़ी मोहब्बत से रहती है। औरत, बहस मत कर। हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, हमें ये बकरी दे दो, हम चले जाएंगे। गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी? हाँ हुजूर, मैंने बोला ना, बड़ी मोहब्बती से चौहदी से रहती है गांव में। तो बुलाओ गाँव वालों को। हाँ ठीक है, बुलाते हैं। दीवान जी, ये औरत तो बड़ी डामिस निकली। तुम नाहक बहस कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी इसको धारा। नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी। लोगों को पता होना चाहिए कि हम सब काम न्याय से करते हैं। हम उनके हैं, उनके लिए हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। कर्मवीर, अब उस औरत को ठिकाने लगाने का काम तुम्हारा। सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। ये देखो, ये लोग ने हमारी बकरी छीन ली। रुक, ए चल चल निकल इधर से। आओ दूल्हे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग ने गांधी महात्मा का नाम सुना है? हाँ सुना है। आप लोग को मालूम है 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी। सरकार के खुफिया विभाग पुलिस पलटन इस बकरी को खोज रहे थे। आखिरकार ये बकरी आप लोग के गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज आप यहाँ इतनी शान से खड़े हैं। उन्होंने आपको आजादी भी दिलाई। सब लोग मेरे साथ प्रेम से बोलिए,
गांधी महात्मा की जय। गांधी महात्मा की जय। गांधी महात्मा की जय। आप लोग समझदार हो, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हो। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, क्या देवी का मान करना चाहिए या नहीं? जरूर होना चाहिए। यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताओ, क्या उनको शांति मिलेगी? नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। अब आप लोग ही बताइए, क्या हमें इस औरत को बकरी देनी चाहिए? यह कहती कि यह बकरी हमारी है और हम भी कहते कि यह बकरी तुम्हारी है। अरे हुजूर बना रहे हैं। और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। इस बकरी में बड़े बड़े गुण हैं। यह कभी इस औरत की लापरवाही की वजह से, खाना पीना ठीक न मिलने से यह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। आज से यह हमारी देखरेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देखरेख में रहेगी। इस बकरी में देवी शक्ति है, जिसे पहचानने की जरूरत है। यह हमारा हर दुख, हर तकलीफ हल कर सकती है। हुजूर, गांव में सूखा पड़ा है। इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत हरे भरे हो जाएंगे। साहब, एक बूंद पानी नहीं, कहीं नहीं। पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। मालिक, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। इसीलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। सरकार, कुआं सूख गया है, पीने का पानी 4 मील दूर से लाते हैं। यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। अरे हुजूर झूठ बोल रहे हैं। अब आप लोग ही बताइए, क्या हमें इस औरत को बकरी देनी चाहिए? यह फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बताइए, आप क्या चाहते हैं कि यह बकरी आराम से सेवाश्रम में रहे या फिर इस औरत के पास? आश्रम में रखे। आश्रम में रखे। आश्रम में रखे। आश्रम में रखे। सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इसे जेल में डाल दो। ये चल, अब तू हवालात की हवा खाएगी। अरे हुजूर, यह झूठ है, आप सब हमारे दुश्मन हैं। चुप रहे। शाबाश, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब यहाँ से खाली हाथ कोई न जाए। आपको जो मानता मांगनी हो आप मांग सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके पास जो कुछ भी है यहाँ निछावर कर दीजिए, सच्चे मन से। इस बकरी को इन फतेह चित्रों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोग की हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। मेरी मानो तो एक बकरी समारक निधि बनाओ। तुमसे नहीं होता तो हम बनाएंगे। उसमें दान दो, जितना भी हो, जैसा भी हो। निधि में काफी पैसा होना चाहिए तुम्हारे कल्याण के लिए। बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बकरी शांति प्रतिष्ठान, ऐसी बहुत सी संस्थाएं होनी चाहिए, तभी कुछ होगा। लेकिन सूखा, बहुत चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे दुर्जन सत्यवी, रुको, ये कौन लेके जाएगा? अरे मेरे लिए रुको। दौलत की है दरकार, ये सरकार आपको। सबको उजाड़ चाहिए, घर बार आपको। मक्कारी, ढोंग, छल, फरेब आप बांटिए। बदले में मगर चाहिए, एतबार आपको। आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं। कोई शिकार चाहिए, हर बार आपको। बकरियों छीन लीनी, जहलो भेज दीनी। और आप आशीर्वाद दीनी, आपने उन्हें बकरी क्यों दी?
वो कहीं गांधी बाबा की है तो हम क्या करें? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। काकी तुम भी चुप रही। अरे मर्दन के बीच हम कब बोले? ठीक है, तो कल को आप लोगों को भी जहर ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी का हो जाएगा। यह सब ठग है, ठग। वो हम जाने थे। फिर चुप क्यों रहे? बताया क्यों नहीं कि वह बकरी व्यक्ति की है और उसे दे दी जाए? अरे भगवान के नाव ले लियन तो काफ करी, कहीं बकरी नाय है, देवी है, देवी का मान होवे की चाहिए। अब हम क्या कहे, देवी का मान न होए। हमारा ही जूता हमारे ही सिर। अरे अब कौन प्रपंच करे? वो कहीं देवी है और हम मान लिया। प्रपंच उन्होंने किया या आपने? उनका प्रपंच वो जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। भगवान भगवान भगवान, बस उसी की वजह से हालत है हमारी। अब भगवान के न गिरियाओ। फिर किसे गिरियाए? अपने भाग के, जब उए आपन नहीं। कैसे मालूम अपना नहीं? आपन होते तो देखते देखते बकरियों ले लेते और व्यक्ति को जहल भेज देते। इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। अरे हम कौन होते देने वाले? फिर किसने दिया? वो कहीं देवी का आश्रम में रखो, हम ना रखो, इस हमरा का कसूर? वो कहीं आश्रम में न रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी। महामारियों के डरवाएं। और अब डर गए? अब डरवाएं तो काफ करी। यह समझ में नहीं आया कि वह झूठ बोल रहे हैं। समझे, मुला झूठ वो बोले, हम तो नहीं बोले। बाबा आप लोग बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। चुप रहो, चार किताब चियन के बीच बैठते हो, कानून बुके लाग्यो। पाप पुण्य तो से देर हम जानित है। हम तो सही बात करते हैं काका, सिखाते नहीं। क्या सही है? यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं। आश्रम जाल है, ये सब चोर है, डाकू। ए बचवा, चोर डाकू के खिलाफ भगवान के हाथ है, हमारे थोड़े हाथ नहीं। काका अब क्या कहे, उन्होंने हमें उल्लू बना दिया। हमें को उल्लू नहीं बना सकता, हम उल्लू नहीं ना बने, उल्लू बने। वो कैसे? मान लो कि बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है, हम माने, हम सच्ची मन से माने, वो नहीं माने, तो बताओ उल्लू हम बने क्यों? बकरी देवी हो तब ना। मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बने? काका उल्लू ना ऊ बने ना, उल्लू तो हम बने जो आपसे नहीं बहस किए। बचवा अब हम पढ़े लिखे नहीं ना, बढ़वैया के संगो साथ नहीं ना। ऊ ठहरे बड़वार, हम ठहरे छोटवार। छोटन का कहना माने के परत है। अब उनके कर्म उनके साथ, हमरे कर्म हमरे साथ। हम पूछते हैं, आप सब बकरी को देवी मानते हैं या नहीं? साफ जवाब दीजिए। मानो तो देव, नहीं पत्थर। आप सब लोग मानते हैं? अरे कैसे कहे नहीं मानते? साफ साफ कहिए, मानते हैं? अरे हमारे कहने न कहने से कहा होते, सब कहते हैं, सब मानते हैं, हम सबसे अलग थोड़ी है ना। मैं ना आश्रम में आग लगा दूंगा। बेटा तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन गिरी है, हम ठहरे छोटवार। ज्यादा सिर उठाया कि चलना ठीक नहीं। वैसे तुम जो चाहो वो करो, अपने मन के राजा हो। वादा कीजिए, वहाँ नहीं जाएंगे। हमसे क्या वादा करावत हो? हमरे मन वही बसे हैं, हम वही रमे हैं, जहाँ देवी वहाँ हम। आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं है बेटा, आश्रम में आग लगाना पूरी दुनिया पर ही है। ये लोग क्या भगवानों से बड़े हैं? तबाही में तो भगवान से भी बड़े हैं। तो इन्हों के पूजो भैया, जलमा यही के मगर से मैं पूजो, पर जूते से। ये गरम खून है बचवा, जो चहका ही रहा है। जो बड़ा बन के आया वो बड़ा बन के रहेगा। कोई छोटा बड़ा बनकर नहीं आया काका, सब बराबर बनकर आए हैं। हमने जानबूझ के अपने को छोटा बनाया है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़े बन के दिखाओ, छोटे मत रहो। देवी देन की कृपा तुम्हारे ऊपर है। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए, हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे, बराबर रहना है। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से ढूंढता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पे है झूमता। नेकी सच्चाई शराफत डर कर सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। ओ बेशरम कुछ कर शर्म, मत हो गरम छोड़ो भरम, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई है ना किसी से कम, है देश के फूटे करम। ओ बेशरम कुछ कर शर्म, अरे मत हो गरम छोड़ो भरम, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम।
बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय जय। इसके दूध में अमृत है भरा जड़ी बूटी की दवा। इसके दूध में अमृत है भरा जड़ी बूटी की दवा। पशु रूप में देवी देवता देगी तुम्हें ये दुआ। पशु रूप में देवी देवता देगी तुम्हें ये दुआ। रोज तेरी मैं पूजा करता हूँ सोने के मंदिर में। महान है पूरे जगत में बापूजी की बकरी। महान है पूरे जगत में बापूजी की बकरी। जय बकरी जय बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय जय। इसके दूध में जीते थे साईं गाँव हुआ शिरडी। इसके दूध में जीते थे साईं गाँव हुआ शिरडी। इसका कोई करे विरोध तो उठ जाए अर्थी। इसका कोई करे विरोध तो उठ जाए अर्थी। इसके नसीब से कोई ना खेलो कोई ना खेलो। महान है पूरे जगत में बापूजी की बकरी। महान है पूरे जगत में बापूजी की बकरी। जय बकरी जय बकरी जय बकरी जय 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 बकरी जय बकरी जय बकरी जय जय। कर्मवीर, अब इन गांव वालों के पास कुछ भी नहीं है। सूखे हैं सब लोग। फिर भी काफी चढ़ाव आ गया। सो तो ठीक है, पर कुछ और उपाय भी। ठीक कहते हो दुर्जन सिंह। उपाय बहुत तरह है, बस बकरी बनी रहे। जैसे? मैं बकरीवाद पर भाषण देने देश विदेश जाता हूँ। बकरीवाद का प्रचार करूँगा। शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा होगा। और हम विश्व के वसुदेव कुटुंबकम। पर तुम क्या करोगे कर्मवीर? मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। पवित्र विचार है। पहले चुनाव जितवाना, फिर मंत्री बनवाना। सारा काम बकरी करवाएगी। हाँ, बकरी मैया। सिपाही, बकरी को यहाँ पे ले आओ। महल दुल्हने बना दे बकरी मैया। देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया। बैंक पर बैंक खुलवा दे बकरी मैया। फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं। बकरी मैया तोरे चरण अरज करूं। पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। दीवान जी, अब आपका काम बढ़ेगा। तिजोरी बढ़ती हो तो काम की चिंता नहीं। कर्मवीर को चुनाव जितवाकर मंत्री बनवाना है। बना बनाए समझो ठाकुर, जिसके पास माया वही मंत्री का जाया। वो सब तो ठीक है, पर कुछ पर क्या? मैंने तो चुनाव की चिन्ह भी सोच ली। क्या? बकरी का सिंग? नहीं। बकरी? हाँ, बकरी। दीवान जी, सारे गांव में ऐलान कर दो, यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो। खैर, आप लोग समझदार हो, आपको मालूम ही तो है उस औरत के साथ क्या हुआ था।
वैसे दीवान जी, वो औरत अभी भी जेल में बकरी बकरी कर रही है या फिर चुप भी हो गई? वो जेल की सलाखे के पीछे बकरी बकरी कर रही है, लेकिन ठाकुर वो छुपते ही वापस आई। ना ना हर ऐश कर जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, वह तरनी जरा जाएगी यह गांधी की बकरी। बकरी की इसलिए सब जय बोलकर चलो, जो चाहो करो, झिझको ना, दिल खोल कर करो। दूषण के साथ सब यहाँ मोल कर चलो, हो टेंट या तिजोरी सबका टोल कर चलो। हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए शराफत तो पत्ता गोल कर चलो। 100 खून माफ करती है यह गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी। कुछ लौकात नहीं? सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। एक बार दर्शन कराए दो सरकार। कैसे करा दे? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया है। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते चिल्लाने लगती है, जैसे आदमी से कोई नफरत हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता सरकार। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। करमवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। जान लो तुम सब लोग, करमवीर को वोट दोगे, उसी की मार्फत में सबका कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। हुजूर दर्शनों को नहीं मिलेगी। दर्शन दर्शन दर्शन, मैं तुम लोग का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी को ही देना अगर अपना भला चाहते हो तो। पर हम पचन हाथी को। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। जान लो तुम सब लोग, जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। अभी भी समय है, सोच लो। क्या करे सरकार, दुई तरफ से हमारे ऊपर मार है, दुई भरकन के बीच में हम क्या करें, कहाँ जाए? हम कुछ नहीं जानते। भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में ना खड़े हो। फिर हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण सेवा हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। जिसे नो देना हो अभी साफ साफ बता दो, धोखे में न रखो। गर्दन नीचे। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम किसी को वोट नहीं देंगे। चुने जाते ही हम तुम्हारी गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। सब यही कहते। और घर में सरकार? घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद। हमें दूसरी सभा में जाना है। क्या कहता था, किसी को वोट नहीं देगा? हाँ, किसी को नहीं। क्यों? यह सब बेकार का नाटक है फरेब। नाटक है? और नाटक कम तेरे दादा खुल गए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास है। जानते हो, ये बकरी मैया का आदेश है। जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है और आदेश भी आप। कुछ पढ़ा है? सोहबत की है, अक्षर कम, कमीनगी ज्यादा पहचानता हूँ। ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। इलाज आपके पास हर चीज का है, बस गरीबी और अन्याय का नहीं है। नक्सलवादी है क्या बे? इसकी तो पहचान आपके पास है। मैं असलवादी हूँ, असल बात करता हूँ। क्या असल बात होता है? यही कि वोट, चुनाव सब मजाक हो गया है। गरीबों की बकरी उनसे पहले पकड़कर पैसा दुआ, अब वोट दो रहे हैं और फिर पद और कुर्सी दुहेंगे। कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला? ना हम पैसे के गुलाम हैं और न ताकत से डरते हैं। कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? हमारा कोई गिरोह नहीं। झूठ बोलता है। यदि अकेला होता तो इतनी आवाज नहीं निकलती। जिसकी आवाज होती है उसके अकेले होने पर भी निकलती है। चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। तोड़फोड़ की सजा जानता है? कौन सी तोड़फोड़? हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। वोट की तोड़फोड़? कोई तोड़फोड़ नहीं, झूठ है। ये राजद्रोह है। इसकी सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं, जानता है? जानता हूँ। अब बकरी की पूजा इसीलिए करते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ और किसी की बकरी नहीं बनूंगा। नहीं, तू तो भेड़िया है। और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी ना बन जाए।
संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए। कुचल कर खड़े हैं हाथ, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। जब तलक हाथ में बंदूक है, जब तलक दिल में उठती भूख है, तब तलक माफ भूल चूक है। गोली बोले धाय धाय, जनता बोले काय काय, नेता बोले भाई भाई, हर गली में साय साय, तुझसे है यही मेरी फरियाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। होगा, जरूर होगा। विशेष भोज, बहुत खास समझे। समझ गया। दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। जी हाँ। सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर कर्मवीर के साथी होंगे। जरूर। ऐसा कौन है जो बकरी बात ना हो? बकरी का नाम लेके चला सारा जहान है। बकरी के नाम पर बना हर विधान है। देखो दीवान जी, अब हम डीआईजी हैं। पर हमारे लिए तो वही दीवान जी हो। दीवान जी में जो दीवानी का चटकारा मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है। समाजवादी मसाला, जो मसाला बकरी ने खा लिया वो तो उसके खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। फिर सोरिया दावत शाकाहारी मानी जाएगी। गांधी जी की अनेक पवित्र बकरी निरामिषी मानी जाएगी। दीवान जी, मिमियाने में जिसके है देवत्व की वाणी, उसके रगों में होगा ही अमृतत्व का पानी। सहने को जोर जुल्म जिसे राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसा उसे बाजी मानिए। दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा ले। गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गए तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब तो शाकाहारी है। बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि। जिसके लेते हैं शरण उसी को खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसी को लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी वो मजबूरी जैसे वह भी जो बेख्तियार। जिसका झंडा हाथ में वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में वह समाया पेट में। पेट ही पेट बस निकल आ रहा है इस देश का। कोई बतलाए भी आकर क्या करूँ इस क्लेश का। मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ। दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। कर्मवीर जिंदाबाद, कर्मवीर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कर्मवीर जैसा हो। कर्मवीर जिंदाबाद, कर्मवीर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कर्मवीर जैसा हो। कर्मवीर जिंदाबाद। ये विजय बल्कि हमारा नहीं, हम सब का है। हमें विजय दिलाने के लिए धन्यवाद। कौन हमदारी यहाँ कौन जबूरा, कौन हमदारी यहाँ कौन जबूरा। कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं बादशाह समझा, और खुद को समझ बैठा मैं चीड़ का दुर्रा। कौन हमदारी यहाँ कौन जबूरा। सेवा का वादा करके वो तो मेवा खा गया, मेवा खा गया रे वो तो मेवा खा गया। राजा वो खुद बना मुझे प्यादा बना गया, प्यादा बना गया मुझे प्यादा बना गया। ओ मत भड़क मेरे दिल यूं खुद पे न बुर्रा, तू ही था ना समझ उसे जो दे दिया तुर्रा। कौन है मदारी यहाँ कौन जबूरा।
टप टप डुर्रा कौन है मदारी यहाँ कौन जमुरा जनता का है ये तंत्र जनता ही इसका मंत्र जनता ही इसका मंत्र जनता ही इसका मंत्र जनता ही राजा प्रजा मदारी और जमूरा ओ मुझको ही पूरा करना हर काम अधूरा अब पी के न झूमे कोई सत्ता का खतूरा टप टप डुर्रा कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा टप टप डुर्रा कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा ओ काका जिता दिया। सब राम जी की माया है। तुम जेल से छूट के आ गए बचवा। हाँ एक और जेल में। और कौन जेल? आप लोगों का अज्ञान जेल ही है। अब वो जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे और अभी आपका नाम लेकर लूटेंगे। हमारे पास लूटे को काव घरा है। बाढ़ आई सब बह बिल्ला गवा। गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा। सरकार कुआं सूखा ऐसा की अन्न का एक दाना नहीं। बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं ले ले। पानी जमीन फोड़कर नहीं निकला। कहूँ कछु नहीं हमरे आबाग खा गए है उसे खा गए। अब हम काफ करी। क्या हुआ विप्ति? अभी ने हम देखे सिपाही ओह का सराज रही वो चिल्लात रही। वो आश्रम में हुई। अब न वो होगी और न आश्रम होगा। अब उन्हें आश्रम की कोई जरूरत नहीं। जो पाना था पा गए। ऐसा नहीं हो सकत। आश्रम में जरूर होए अस जुलूम नहीं हो सकत। कोनो और बकरी होए झाका सिपाही लिए जात होए। अरे वो कसाई है तुम सब कसाई हो। अब हम काफ करी। अब भी कुछ समझे आप लोग? अपने बकरी को देवी माना। बाढ़ में सारा गांव जाने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे। सूखा पड़ा खुद भूखे रहे। घर का खाना आश्रम को दे दिया। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की भागदौड़ थमाए। अब भी कुछ समझे आप लोग? बोलते क्यों नहीं? यो कहा बोली है ऊ कसाई है। हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। उसके लिए तो शहर तक जाना पड़ेगा। हो सकता है अभी सही सलामत मिल जाए। तो फिर चलो चलते हैं। चलो। आप लोग चलेंगे या ऐसे ही पत्थर की तरह बैठे रहेंगे? चलो। जिस धूल से शहरों में मची है रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां, उस आदमी को वो आदमी मानता नहीं। जब उसका काम निकल जाए वो उसे पहचानता नहीं। उसकी बीमारियों से चला रेलगाड़ियां, उसके ही चित्रों से भंसूर साड़ियां, उसके ही पेट पे चलता है जश्न का चिराग। कहते हैं समझवाद है ओ देश जाग जाग। 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 तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिल सहता है।
माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो। अरे मंदार जी माइक तो चालू करो। हेलो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज हम जो है वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों तक चले जाने पर भी खत्म नहीं होगी। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। बाबर ने, माफ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम तो गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं, हमारे पास राजपाट कहाँ। फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक दिन के लिए एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। कभी इस भिश्ती की आवाज में ताकत थी, इसकी आवाज ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज में अभी भी कुछ असर हो सकता है। ए भिश्ती। हाँ सरकार। कुछ गा के सुनाओ। जी। बकरी को क्या बता था, मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी, अपने ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल आजिज़ का, चाहे वो डोल किया हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। जा भाग यहाँ से, बना फिरता चौबदार। कुछ और गाओ भिश्ती, क्या वही पुराना राग लापते हो? हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे है। बुला लाओ उसे, इस मौके पर हम नई पीढ़ी को जरूर सुनेंगे। आओ बेटे। यही है तुम्हारा लड़का भिश्ती? हाँ। गाओ लड़के, कुछ फड़कता हुआ गाना। सच में गाओ? गाओ गाओ गाओ। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बनकर रहना सिखला दिया, बकरी की मैंने कांटे में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया, बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बनकर रहना सिखला दिया, बकरी की मैंने एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप चलना सिखला दिया, बकरी की मैंने सींगे भी है चलने वाली चूरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया, बकरी की मैंने लाला जी और नेताजी के ऐशो जश्न में बूटी बूटी कटवा दिया, बकरी की मैंने हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया, बकरी की मैंने। यह क्या मैंने लगा रखी है? अब यह मैंने नहीं होगी, पकड़ो इन लुटेरों को, पकड़ो इन्हें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। छोड़ो मुझे, मैं तो देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत हो चुका,
अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम बिदर शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम किसी की रागीर नहीं, इंकलाब हैं, हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इंकलाब हैं। जिर्दो जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आजादी का अलम लाने वाले हैं, घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं। जबर तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं, नया निज़ाम इश्क भी बनाने वाले हैं, जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हों, अब उन छतों को हम गिराने वाले हैं। हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम किसी की जागीर नहीं, इंकलाब हैं, हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इंकलाब हैं। इक़्तिसाद को गिराने वाले हैं, इल्मोहन गाने वाले हैं, हम तबकाती तक़सीम को भिगाने वाले हैं, हम समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं, हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं, मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं, हम इंकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम इंकलाब हैं, हम किसी की जागीर नहीं, इंकलाब हैं, हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इंकलाब हैं। जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम बिदर शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम इंकलाब 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 हैं। I'll smile, I wanna taste the full this time. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Yeah, yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable.
चल 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 पीछे से चलना है पीछे से That was a fantastic play. So now let's give them all a resounding round of applause, please. The students have showcased an exceptional performance that deserves our utmost praise. Despite the plays being written many years ago, the relevance transcends time and resonates with us even in the present era. The enduring messages conveyed in these plays have stood the test of time and continue to hold true in today's world. We are happy to have Suhas Ahuja as our chief guest for today's program. Suhas Ahuja is an actor, filmmaker, and musician. He was literally born into the theatre tradition, as his parents are veterans who started their stage career during the heyday of Hindi theatre in Delhi in the 60s and 70s. Apart from an illustrious theatre career himself, he is also a film and TV actor who made his mainstream debut in 2012 with Talash. He has acted in a few films, countless TV ads, and many web series, notably the shows POW Bandi Yuddh Ke, Out of Love, and The Married Woman. Later this year, Suhas will be seen in the highly anticipated feature film The Archies, Zoya Akhtar's official adaptation of the beloved comic book series for Netflix. He has also worked as a music composer and producer, but chooses to focus more on original rock music. He is the frontman and songwriter for the Suhas Ahuja band, who were the finalists in the season 1 of Nexa Music, a competition curated by A.R. Rahman and Clinton Cerejo to identify the best English songwriting in India. Now the band is on the verge of releasing their debut full-length album. Now we request our esteemed chief guest to come and share his thoughts with us. Yes, you guys happy? Well, you should be. Wow, what a day. That was quite a show. And I think, what? I think we were quite the unsuspecting audience, everybody getting here at 10 in the morning and being given this double dose of wonderfully politically charged theater that encourages us to be rationalists in this day and age. But fantastic. Congratulations to all of you, first of all, for your wonderful performances. You know, I mean, I can say things about the power of art and the power of theater and all that, but just want to also say congratulations to all of you for having such a fun day, because, you know, we shouldn't forget that it's just fun. It's so much fun to do theater, just to be on stage, to wear costumes and dance, and just don't really get to do that very much. So yeah, congratulations. Coincidentally, I just saw something last night on Instagram. It was James Cameron, the filmmaker. He was giving a TED talk, and he said something about how in the field of art and innovation, failure is an option. And, you know, so he was saying something about the fact that, like, we tell each other, and generally the idea is that, like, failure is not an option. You hear a lot of people say failure is not an option, but he went on to say that failure is an option because you're trying something for the first time. You're hoping to create something that nobody's seen. You're hoping to innovate and really present something unique. So he says that failure is an option, but fear is not. And I'd like to leave these wonderful students with that thought, because today you all went on stage and, you know, you went there to create something, to create a moment of theater, of live performance for an audience. And just moving forward, you know, I encourage you and I encourage all of us just to keep that in mind, just go for it. Really pursue, you know,
not fearing things and really like going for the performance and letting that carry on into life. Thank you very much. Again, I think that was just a kind of a surprising double dose of theater for me. It was very very charged. I thought. I mean, what material that we got to watch today. So thank you very much, and congratulations to Class 8 and to Shishu 1. Thank you. Thank you so much for enlightening us. And now we kindly request Namra to present a token of appreciation to our chief guest. We request Mandar to come on this. These remarkable performances would not have been possible without the unwavering dedication and guidance of our esteemed directors, Mandar, Mithil, and Anoushka. It is with great pleasure that we introduce them to you now. आठवीं कक्षा प्रोडक्शन हाउस का हिंदी नाटक बकरी श्रीयुत मंदार गोखले ने दिग्दर्शित किया है। आप पिछले 22 वर्षों से रंगभूमि से जुड़े हुए हैं। अपने कई नाटकों में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं की है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से यादगार बनी है, जैसे हैमलेट, 60 सेकंड डीप और द बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग। इसके अलावा फ्रैब्स काफ्का की कहानी पर आधारित हंगर आर्टिस्ट नामक एक पात्रीय नाटक में भी अपने कार्य किए हैं। अफ्रीका यूरोप थिएटर फेस्टिवल में इसका चयन और प्रदर्शन हो चुका है। इस नाटक को 2018 में मुंबई थिएटर गाइड की तरफ से श्रेष्ठ नाटक के रूप में नामांकित किया गया था। पिछले 10 वर्षों से आप ड्रामा स्कूल मुंबई में फैकल्टी मेंबर के रूप में भी कार्यरत है, जैसे रंगमंच में अपना भविष्य या करियर बनाने वाले कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने कई स्कूलों में वार्षिक उत्सव के लिए 18 से अधिक नाटकों के दिग्दर्शन किया है। आपने शिशुवन में पिछले 11 वर्षों में 12 से अधिक हिंदी और इंग्लिश नाटक दिग्दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ आपने बेस्ट सेलर, मी वसंत रफ, ब्लैक एंड वाइट, तलाश, तुम मिले और शोर इन द सिटी इन चित्रपटों में तथा अनेक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है। We request Mandar to come on the stage and accept the token of appreciation. We would also like to call Malvika on the stage. We request Shah to hand over the token of appreciation to Mandar and Malvika. Malvika is an alumni of Shishu 1 and assisted Mandar in polishing the scenes. We request Arav to okay. Mithil Shah and Anoushka Zaveri, both esteemed alumni of Shishu 1, proudly graduated in the year 2014, directors of the play To Kill a Mockingbird. Mithil Shah, an ex-student of Shishu 1, completed his graduation in 2014 and went on to pursue economics at the New York University. While working at a digital market firm in New York, he discovered his true passion for acting. Driven by his determination, Mithil enrolled in a short course at the prestigious Stella Adler Studios.
Subsequently, he made the courageous decision to leave his job and return to Mumbai to pursue his acting career. Over the past few years, Mithil has made significant strides in the field of acting. He has graced the stage as the lead in 3 plays performed at the illustrious Royal Opera House. Additionally, he has showcased his talent in numerous advertisements, movies, and web shows. Mithil's unwavering commitment and dedication have propelled him forward in his artistic journey. Anoushka Zaveri, a talented individual with a passion for theatre, possesses a rich background in English literature and drama. Over the past 3 years, she has emerged as a prominent theatre director and producer, making noteworthy contributions to the field. Anoushka has taken the lead in spearheading a youth theatre movement, creating a platform for young artists to showcase their talents. Additionally, she has ventured into the realm of podcasting, producing captivating theatre-based podcasts that engage and inspire listeners. Her expertise extends beyond the limelight as she efficiently manages backstage operations for popular theatre productions in Mumbai. Recently, Anoushka took on the role of a dramaturg and creative producer for a remarkable one-man show titled Mia Boy Diaries. This thought-provoking production sheds light on the challenges faced by young individuals in contemporary India. Set to premiere at the esteemed Prithvi Theatre in July, it promises to captivate audiences with its unique narrative. When not actively involved in managing youth theatre festivals or nurturing young writers, Anoushka indulges in a love for literature. She avidly reads works of world literature, immersing herself in diverse narratives and perspectives. Additionally, she showcases her writing skills by contributing to prominent lifestyle publications. Anoushka's love for theatre remains unyielding as she dedicates her time to experiencing and appreciating the art form through attending captivating plays. We would like to take this opportunity to invite our directors, Mithil Shah and Anoushka Zaveri, on the stage to receive a token of appreciation for their leadership and vision of our play and in helping us become the best versions of ourselves. We request Krupa to hand over the token of appreciation to Mithil. We request Aryan Shah to hand over the token of appreciation to Anoushka. Thank you. I would request the directors to say a few words. Mithil and Anoushka, please come here. And even Mandar, sir. शुरुआत कर दो। जनरली मैं मौका छोड़ता नहीं है माइक पे आने का, मतलब हमेशा नाटक मुझे अगर माइक दिया भी नहीं जाता तो मैं छीन लेता हूँ वहाँ से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। कांग्रेस अनुष्का, मिथिल, बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब यार। कैसा लगा? अच्छा लगा? तालियां बहुत कम सुनाई दे रही है। अच्छा लगता है जब इवन मालविका जो मुझे असिस्ट कर रही थी, मालविका ने अभी 10th पास आउट किया, स्कूल से पास आउट हुए, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी असिस्ट करने में, सीखने में थिएटर को, और उसने काफ़ी कुछ काम किया है इन आपके शैतानों को लाइन में लाने के लिए। बहुत डांटा है उसने, क्योंकि सीनियर होने के नाते उसको वो अलाउ था। तो मज़ा आता है जब इवन ये दो भी स्कूल से पास आउट है और वो डायरेक्ट कर रहा है स्कूल में प्ले। अच्छा लगता है कि आगे जाके हम ऐसा ही विश कर रहे हैं कि शिशुवन के ही बच्चे आके शिशुवन के प्लेस डायरेक्ट करें, और इन्होंने ऑलरेडी थिएटर और एक्टिंग परस्यू किया अपने करियर में। जरूरी नहीं कि वो भी करे, पर डेफिनेटली आप उनमें चेंजेस तो डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि शिशुवन एक ऐसी चीज़, हम काफ़ी स्कूल्स में जाते हैं डायरेक्ट करने प्लेस,
पर शिशुवन में जिस क्वालिटी का काम होता है वो कुछ अलग ही होता है। हर एक स्टैंडर्ड के लिए एक डायरेक्टर वो बहुत डीपली काम करता है, हर कैरेक्टर्स को लेके, हर लैंग्वेज को लेके, उनके कॉस्ट्यूम को लेके। जो शायद ये साड़ियाँ और ये यूपी स्टाइल ये कपड़े वगैरह कभी पहनेंगे नहीं ये लोग, लेकिन ये एक ही मौका है यहाँ पे मिलता है थिएटर में पहनने का, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम आशा करते हैं कि आपके ही बच्चे कभी आ जाए और हम लोग निकल जाए, और हमें अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा कि जब शिशुवन के बच्चे आके खुद शिशुवन का पूरा एनुअल डे प्लान कर रहे हैं अच्छी तरह से। कुछ लोगों के बिना बुलाए ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो मिथिल और इसको आगे हैंडओवर करने से पहले मैं चाहूँगा कि पूरा सपोर्ट स्टाफ, पूरी टीचर्स प्लीज़ स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि ये जो काम कर रहा है पीछे हमारे, वो ये उसकी वजह से ही पॉसिबल है। हमारी रिहर्सल मैनेज करने से लेके हमें हॉल की अवेलेबिलिटी को लेके सब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी, इवन चाय हमें टाइम पे मिल जाए ताकि हम एनर्जी के साथ बैक बाउंस हो जाए। तो सब टीचर्स प्लीज़ आ जाओ, सपोर्ट स्टाफ प्लीज़ आ जाओ, संदीप वगैरह जो भी सब लोग आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ प्लीज़ आगे प्लीज़ प्लीज़। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां। डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, प्लीज, थैंक यू सो मच। यस, I don't know if they can see me. Hi everyone, thank you so much for coming today. I wanted to actually address all of you. Of course, congratulations, it was a beautiful show. But I want to remind you that this moment of you sitting on stage can turn into so much more than what it is right now. For both of us, our entire, our love for theatre began this way. And then we only have the school to thank for that opportunity. And my life would be absolutely colorless if I didn't have the theatre by my side. So please remember, Gopesh, are you listening? Please remember that this is an art form that you can continue to cultivate, and I hope to see more of you doing theatre in the future after 10th, 12th, whatever, and keep the feedback that we've given with you and try to see if it's applicable in other places of your life. I don't want to sound like a grandmother, but still, it's really important, and what you learn from this art form can be truly valuable in the rest of your studies and everything. So yeah, thank you, Shishuan. Thank you, all of you, for making this an enriching process for us. And Mithil will have the last word. So I'm guessing we're running out of time, but I'll just say a few words. So when Prachi asked us to take this on, honestly, I was very stressed. And I have been stressed on countless days, which I think Sunil has experienced. Prachi and Sunil had to text me and be like, listen, relax, it's going to all happen and, come together. But the whole process has been just so much fun for me, for the kids. We yelled at them, we found ways to somehow, mold them and get them here, and they have just outshone themselves. They have gone beyond their capabilities. So one round of applause for them. And again, this would not have been possible without, for example, Keshav sir handling the music, Dipesh sir designing the dance, the teachers handling so many departments, props, discipline, Mini, Reshma, Shalu, all of you, thank you so much, the support staff, always encouraging. Preetam is here. I met Preetam after like some 10, 12 years. And it just feels like she told me, I was like, Preetam, aapko kitna saal hua? She's like, 15 something saal ho gaye. And she's like, mera din aise jata hai, pata hi nahi chalta ki ye kaam hai. It's so much like a family at Shishuvan that, people just want to stay here for as long as they want to. And which is why we keep coming back to school. Thank you so much for giving this opportunity to us. And finally, getting a play together in front of Suhas Ahuja, who directed my play when I was in the 7th grade and 6th grade. He directed our play. Kabira. So he's gone from a director to a friend to a mentor to like a chill buddy, and just putting up a play in front of him just means a lot to me, to us. So this is just fantastic. It's all coming full circle. So thank you so much.
3 cheers for the directors. Hip hip! Hip hip! Hip hip! It has been an absolute pleasure and a truly remarkable experience collaborating with you. Your dedication, talent, and artistic vision have enriched our production, and we are immensely grateful for the opportunity to work alongside you. Thank you for your outstanding contribution and for making this journey a truly memorable one. हमें खुशी है इस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित रहे। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारी सहायता की। हमारे विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक और कार्यालय में काम करने वाले सारे कर्मचारी जिनकी सहायता के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। We extend our heart-left gratitude to our exceptional audience, whose presence and support have made our play truly extraordinary. Without your enthusiasm and participation, this production would not have been possible. Your presence has breathed life into the performance, and we are deeply thankful for your unwavering support. A special word of appreciation goes out to our dedicated support staff, office staff, and teachers who have been by our side throughout, tirelessly working behind the scenes and putting in immense efforts in every aspect of the annual day. Your hard work and commitment have been instrumental in making this event a resounding success, and we are immensely grateful for your invaluable contributions. We would also like to express our gratitude to the management of the Sri Hirji Bujraj and San Sevio Jain Chaitralaya and the leadership team of Shishwan School for providing us with this incredible opportunity to create a remarkable experience at the beginning of the year. This event has set tone for future endeavors, and we are excited about the prospect of every upcoming event surpassing this one in the coming academic year. Your belief in us has been a driving force, and we thank you for your unwavering support. A special acknowledgement goes to the management of Mysore Association and the dedicated staff of the auditorium. Your assistance and support have played a pivotal role in ensuring the success of this event. We are truly grateful for your generosity and cooperation. Now, let us applaud and recognize our talented students who graced the stage with their remarkable performances, and the hardworking students who worked diligently behind the scenes. Your dedication, creativity, and teamwork have been commendable, making this production a grand success. As we conclude the program, we kindly request everyone to stand up for the national anthem, paying tribute to our nation and its values. All the students and the parents to be seated. Dear parents, please remain seated and kindly allow the dignitaries to proceed. The students will be dispersed class-wise. Okay. Children, please be seated. Parents of only Karma class, children of Karma class, you can go with your parents and take the bags on the way. Only Karma class, please.